इस पे थोड़ा देख लेते हैं, राइट? इंडियन मानसून, वी हैव डन दिस. Here are some factors which affect Indian monsoon, like El Nino, Southern Oscillation, Indian Ocean Dipole, Equinox. डिस्कस करें उनको? ओके, चलो अभी उनको करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसको लास्ट करते हैं, ठीक है? दिस इज सॉइल्स ऑफ इंडिया. ऑल दी सॉइल्स मींस ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब ये एक साथ ही आपको पूरा मिल दूंगा, ठीक है? पूरा इंडिया का एक साथ हो जाएगा. Alluvial soil, they are deep, well drained, rich in minerals like potash, phosphorus. ये मतलब all these things ये थोड़ा factual manner में है ना? Found extensively in the Gangetic plains, Brahmaputra river valleys. Highly suitable for crops like these black soils. They are also called regur soils, developed from volcanic lava-rich material. Deep black color, clay structure, high water holding capacity. They are known as for their stickiness when wet and crack extensively. Like they are the distribution areas. These are the crops which are well grown in such type of soils like cotton, soybean, sugarcane. Red soils derived from weathering of crystalline rocks like granite and gneiss. They have reddish color due to the presence of iron oxide. ठीक है? They are largely in these areas, and largely in peninsular India and northeast. Suitable for crops like millets, pulses, cotton, groundnut. Laterite soils, highly leached tropical soils where iron and aluminium oxides accumulates. Aluminium, I've told that aluminium in the upper horizons. Iron also. Lateritic soils are reddish brown. They are also brownish, some reddish type soils, which in iron and aluminium oxides. They are generally infertile and low moisture. Not infertile, you can say that they are suitable for cashew and such type of means dry fruits forming in highland areas. Cashew is mainly grown in such type of soils. Okay, and found on plateaus and hilly areas of Western Ghats, Eastern Ghats, and Central India. Forest or mountainous soils, sandy to clayey, found in only in Himalayan foothills, Western Ghats, means all the mountainous areas. Arid or sand, ये भी एक sandy soil है, sandy structure, sand, silt. Saline soils are a subtype found in arid regions with salt content. Then saline and alkaline, they are also called Usar soils. Usar means that is not suitable for farming. Usar. बिल्कुल. High pH, because this is an alkaline soil, तो high pH होगा उसमें, है? And और very low pH, saline, जब वो saline हो जाएगा. Scattered throughout India में, especially in arid and semi-arid zone, but concentrated in. जहाँ पे इस टाइप के का क्लाइमेट होगा, वहाँ पे इनके डेवलपमेंट के ज्यादा चांसेस होंगे. They require special reclamation techniques like leaching to remove the soil salt. Leaching means by draining the soil, and also adding gypsum. इसमें लिखा नहीं है, I will add it. Peat soils, waterlogged soils हैं, organic matter बहुत ज्यादा है इसमें, है ना? High organic matter content, dark color, poor aeration means less amount of oxygen. They can be acidic and have a spongy structure, texture when wet. So they are found in delta regions. Okay. Now forests or vegetation of India. Like in India, there are 8 type of soils. There are 16 type of forests in India. You can write down 8 types of soils, and there are 16 types of forests in India. One by one, we'll do them. Major division I have told: tropical, subtropical, temperate, and alpine. This is the major division. Under those divisions, there are subtypes. Like tropical forest, high rainfall होता है इनमें. They are moist and wet. Rainfall is in tropical wet, especially in tropical wet evergreen forest. The rainfall should be more than 250 centimeter. Soil is mostly red or lateritic because they are the same area. I have said that in all the areas where there is more than 250 to 300 centimeter rainfall, वहाँ पे lateritic soil develop हो जाएंगे. In all the other areas,
in the same type of climate, red soil, and the same type of rock type, red soil develop हो जाएंगे. So that is why they are the areas where lateritic and red soil is found. Trees are mostly of dense canopy. They are the tree types. One second. अब जहां तक ट्री टाइप्स की बात है, बहुत तरीके के ट्री टाइप्स हो सकते हैं. एंड इट विल मेक यू मोर कंफ्यूज्ड कि कौन सा ट्री टाइप किसमें मैं याद करूं. ये एक प्रॉब्लम हो रहा होगा फॉरेस्ट के साथ, है ना. बट इससे आपको बाहर निकलना है. आपको मेजर ट्री टाइप्स कौन से पर्टिकुलर फॉरेस्ट टाइप में है, बस केवल वो दिमाग में रखना है ना. अदरवाइज एक ही टाइप का फॉरेस्ट टाइप है, उसमें 50 तरीके का ट्री स्पीसीज है, आप किसको किसको याद कर सकते हो बताओ. देयर इज अ लिमिटेशन. So basically, like this mahogany, rosewood, ironwood, some type of canes, they are found in such type of wet evergreen forest. Forest canopy is green foliage throughout the year because they are evergreen, characterized by evergreen trees. Trees are very tall. They have buttressed trunk or root, buttressed roots. What is the use of this buttressed roots? Buttressed roots are like that. Means root is, it has such type of large structure. Means root is not so as to get the minerals as soon as they are released in the, their root is buttressed type. It has a large area. They are not very deep. They are very shallow roots. हम लोग को ऐसा लगता है ना कि उनके जड़ बहुत गहरे होंगे, कि इतना डेंस फॉरेस्ट है, तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि इनके जो रूट्स होंगे दे शुड बी वेरी डीप. लेकिन उनके डीप नहीं होते रूट्स. रूट सिस्टम इज लाइक दैट, लाइक दिस इज अ लार्ज ट्रंक. उनके रूट सिस्टम्स ऐसे होते हैं. दे आर मोर वाइड, नॉट वेरी डीप. तो इस टाइप के जो बट्रेस्ड रूट्स हैं, मींस द रूट सिस्टम इज वेरी वाइड रूट्स. You will also study this under ecology, that the soils of these forests, especially laterite soil, is not a very fertile soil. आप सोच सकते हो कि laterite soil बहुत fertile soil होगी, but it is not a fertile soil. Because in upper horizons there is more accumulation of iron and aluminum only. All the minerals, they go down because of leaching. All the humus, that goes down because of leaching. Right? So in the upper horizons, there is a deficiency of minerals and humus. That is why laterite soils are not very rich soils in minerals and humus, because all the material goes in the lower layers, lower horizons of soil, with the more leaching, because there is high amount of rainfall. So these trees, they know it, that we have to attain the minerals as soon as they are released in the upper horizon. Otherwise, after some time, they will go down. So to attain that mineral as soon as it is released by different organism activity, you know that minerals are released. Because this is the region also where there is high temperature and high humidity. Because of that, more amount of degeneration occurs there. All the organism activity is very fast there. So though minerals are released, they are in high amount, but as soon as they are released in the upper horizons, because of high rainfall there, they go towards the lower layer. So to attain those minerals as soon as they are released, their root structures are very wide. They are called buttressed roots. And this also helps to keep the tree upright during a storm, because this structure, because roots are very wide, they can catch the soil in a very sturdy manner. So they become upright. Bark of the trees is thin and smooth. Trees in this forest are multi-layered. They are multi-storied, multi-layered. Shrubs cover the layer. Shrubs cover the layer closer to the ground, understory, followed by short trees, middle story, then tall trees, top story, means multi-stories. Always 3 to 5 story. They are just like tropical rainforest.
means under world climates that you call tropical rainforest, just like that they are tropical wet evergreen forests in India. That is why the same type of tree species, mahogany, rosewood, ironwood, canes. Understood? There are ferns and different species of orchids that grow on the trunks of the trees because of that humidity. They are always wet, their trunks. Those ferns and orchids grow, mosses are there because of that. They are mainly found in the high rainfall areas of the Western Ghats, Andaman and Nicobar, Eastern Himalayas. Why not in Western Himalayas? Only in Eastern Himalayas. Because you know that from yeah, there is high rainfall. मैंने बताया था ना अभी कि like this is India. Here on this part, rainfall decreases from west to, and here from east to west. Means there is high amount of rainfall on the eastern. क्योंकि जैसे जैसे वो winds अंदर को जाएंगे, they will lose their moisture, which they have picked from the ocean. क्योंकि अंदर तो कोई moisture का कोई बड़ा सोर्स नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, नदी होगी, कोई तालाब होगा, अंदर तो कोई moisture का सोर्स नहीं है. So in eastern Himalaya and northeastern region, Andaman the same, Arunachal Pradesh, खास तौर पे Silent Valley, they have well preserved wet evergreen forest. Right? तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये आपको भी नोट करना है या हाईलाइट करना है, जैसे भी करके. अब पीडीएफ तो मिल जाएगा, बट आई थिंक इन क्लास यू शुड एटलीस्ट नोट डाउन दीज थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन दोज एरियाज. पीडीएफ मिलेगा तो फिर आप रिवाइज तो करोगे, बट फोकस नहीं कर पाओगे उस पर, बिकॉज क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड फ्रॉम दीज थिंग्स. क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एक्चुअली, पूछे भी गए हैं यहां से. बट हमेशा एक नई पॉसिबिलिटी होती है एक नए टाइप के क्वेश्चन की, एक नए तरीके से पूछने की, है ना. द कंटेंट इज ऑलवेज द सेम. Questions are asked in different manners and answers are also different, right? So like these forest canopies, dense, they have buttressed roots. They have the trees are upright, the roots are wide, bark is thin, like this multi-layer, multi-storied structure. There are ferns, orchids and mosses. अब यही एक स्टेटमेंट में लिख देगा, you will get confused. कि there are ferns and orchids in tropical wet evergreen forest, है ना. आप सोचोगे कि यार ये तो पता नहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, या और भी दूसरे फॉरेस्ट टाइप में भी होते हैं, ये भी है. इट इज नॉट ओनली दैट दे आर हियर, दूसरे टाइप में भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ देयर आर एग्जाम्पल्स लाइक इन केरला इंपॉर्टेंट स्पीसीज आर दीज. अब दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट कि आप इस पे सारा फैक्चुअल कितना याद करोगे. बट आई विल हाईलाइट सम ऑफ देम. Like Mesua, like this white cedar, they may be important. Toon, mostly found in Andaman Nicobar. Hopia, जामुन बहुत टाइप के फॉरेस्ट टाइप में होता है. Canes, different type of canes. Agar. These species are in Kerala, also in Andaman Nicobar. In northeastern region, you will find such type of species. Then tropical dry evergreen. Okay, let us start. So after tropical wet evergreen, it is dry evergreen. Means the amount of rainfall is decreasing only. Wet evergreen means very high amount of rainfall, almost 250 to 300 centimeter rainfall. Somewhat lower than that, it will be a dry evergreen type. Okay, forest canopy here will always be, means there is not a great difference between wet evergreen and dry evergreen, क्योंकि amount of rainfall almost is the same. Dry evergreen are found in parts of Deccan and coastal plains, mainly in eastern Ghats of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Means they are mainly concentrated in Deccan area and Andhra Pradesh and Tamil Nadu. They are hard-leaved evergreen trees with fragrant flowers, with a few deciduous trees. Means some of the trees will be of deciduous nature because they are dry evergreen. Very few
tree species will be there of deciduous nature, but largely they will be of evergreen type. Forest types or vegetation type is what? An assemblage of tree species, different type of tree species. What is a forest type? An assemblage of different tree species found in a particular climatic setup. एक particular climatic setup है, उसमें different type का tree species है, that is your forest type. And it needs a particular density as well. So, for example, in Andhra Pradesh, the main tree species is khirni, coco, रीठा. रीठा आंवला सीकाकाई ये कुछ लगाते नहीं है बाल में, अच्छे हेयर के लिए. टैमरिन, नीम is such type of, neem and jamun is such type of tree, they are found in many type of forest types. तौड़ी, तौड़ी पाम जिससे ताड़ी बनाते हैं, ये so tropical semi evergreen, okay, tropical dry evergreen and semi evergreen. So there is a somewhat difference between dry evergreen and semi evergreen. थोड़ा सा रेनफॉल का अमाउंट ड्राई में ज्यादा कम होगा, सेमी में थोड़ा सा कम होगा in comparison to wet evergreen, right? Predominance of the same evergreen broadleaf trees. Canopy is never without green foliage, mostly dense, comprising of large number of tree species, both of wet evergreen, and they also find moist deciduous. In some of the trees will be of moist deciduous nature, but largely means this is a combination of wet evergreen and moist deciduous type trees. And forest type is called semi evergreen. There will be climbers, epiphytes, because all of them are evergreen. Evergreen जो भी tree species होंगे उनमें climbers होंगे, epiphytes होंगे. This is the feature. Like in Kerala, they are the species Aini, Semal, Guttel, Hopia, this is a tree species, Kadam, Laurel, Rosewood, Haldu, Kusum, such type of Bonsam in West Bengal, white cedar, champa, mango. Mango is actually mostly found in moist deciduous type. So now you'll see that there is no defined tree species type. Some of their means unique tree species are there in a particular forest type. Moist deciduous अभी आगे आएगा. Means अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग forest type पढ़ रहे हैं, तो we are starting with evergreen. Okay. After evergreen, it is semi evergreen. Then it is dry evergreen. Then further और कम होगा amount of rainfall, तो ये क्या हो जाएगा, moist deciduous. Further dry deciduous. So the forest type will change in this manner with the degrees of rainfall. Evergreen, semi evergreen, dry evergreen, then moist deciduous, then dry deciduous. Like in this particular forest type, there is a combination of such type of trees, means which are found in wet evergreen, and some of the trees which are found in moist deciduous type, means there is a combination of both, right? Tropical moist deciduous है ना, अभी amount of rainfall कम हो गया तो अब tropical moist deciduous हो जाएगा. This is deciduous, means in a particular dry season some of the trees, means predominance of deciduous broadleaf trees, मतलब उनका predominance होगा. ऐसा कोई नहीं है, there is no restriction कि इस type के forest में कोई evergreen tree नहीं हो सकता है. There is no boundary geography. उस particular location में कोई ऐसी condition होगी तो हो जाएगा, है ना, कोई रोक नहीं सकता है उसको. But there will be a predominance of deciduous variety. Type consists of seasonal tree communities and few evergreens with an annual cycle. Means there will be few evergreens. In tropical moist decidual forest, the onset of leaf flushing starts in late May and early June. जैसे भी dry season start होता है,
इसमें भी कुछ स्टोरीज हैं, लेकिन उस टाइप के 3 स्टोरी 5 स्टोरी अरेंजमेंट नहीं है, राइट। क्लाइंबर्स यहाँ पे भी हैं थोड़े बहुत, यहाँ पे भी बेम्बू है, केन्स भी है, एपीफाइट्स भी है, क्योंकि जहां पे भी थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ रेनफॉल ठीक ठाक है वहां पे हो जाएगा, ठीक है। अंडमान आइलैंड्स में इस टाइप का फॉरेस्ट भी है, मींस देयर इज वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, देयर इज ड्राई सेमी, एंड दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज आल्सो देयर। Moist deciduous forests occur in all parts of India except Rajasthan and Trans Himalayas. They can be found in almost all parts of India, moist deciduous, because इंडिया में सबसे ज्यादा अगर एक्सपेंशन किसी का है तो डिसिडुअस टाइप के ट्रीज का ही है। उसमें मॉइस्ट भी है, ड्राई भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स दे रिसीव मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो मोस्ट ऑफ द ट्री वेराइटीज आर मॉडरेट, ईदर मॉइस्ट और ड्राई डिसिडुअस टाइप। So they are the species especially found in Andamans. Padok, white chuglam, badam, धूप, चिकरासी, कोको। In Maharashtra, teak, laurel, haldu, rosewood, all are important. Kusum, amla. In Uttarakhand, it is sal. It is haldu also there, jamun, mahua, they are common species. Now we can see that in the southern part it is teak, in the northern part it is sal. तो इस टाइप का मतलब थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि इन दी सदर्न पार्ट, ये जो नियर बाई महाराष्ट्र है उसके इन एंड अराउंड देयर इज टीक, मोर स्पीसीज ऑफ टीक, एंड हियर मोर स्पीसीज ऑफ साल्स इन द नॉर्दर्न पार्ट. Then tropical dry deciduous. After moist deciduous, this will be tropical dry deciduous. Here the forest become entirely leafless, means in a particular season, when dry season starts, they will entirely become leafless, and bark of the trees is somewhat thicker and rough in dry deciduous. Number of species will be less. जितना amount of rainfall कम होगा, the biodiversity will diminish. Means the number of species is less compared to evergreen, semi-evergreen, and moist. This is the concept. Canes and palms are absent. They are not there. Now this is the special feature of this forest type. There will be no canes and no palms, because they are always found, canes and palms, they need more amount of rainfall, but they are dry deciduous. In the same way, epiphytes and ferns are also very rare because of less amount of rainfall. In the same way, climbers are comparatively few. Herbaceous vegetation is quite common. Means the vegetation is of the type of herbs. That is quite common. A question may be asked in this manner also, that these are the features. Now, which one of the following is the forest type? So you need to know the features, special features of a particular forest, and they are found in the drier parts of India. Like in Madhya Pradesh, the varieties teak, tendu, rosewood. It is a common species of all the deciduous type forests. This is very special, palas. When you go to Madhya Pradesh region, you will find the ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लगी हो. आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा जैसे आग लगी हो. वो पलास के फूल होते हैं. They look like fire in the jungle. तो ये हल्दू भी काफी कॉमन स्पीसीज है. बेल, यू नो इट, बेल, उसका हम लोग जो गर्मी में जूस या उसका शरबत जो पीते हैं. So they are special species. Teak, red sanders, a very वही तो मैं बोल रहा हूं कि सारे नाम नहीं याद करने हैं. लाइक रेड सैंडर्स, ये बहुत जरूरी है. रेड सैंडर्स, बिकॉज इट इज ऑलवेज इन न्यूज, और बहुत ही रेयर ट्री स्पीसीज भी है रेड सैंडर्स. रेड सैंडर्स, अर्जन कॉमन स्पीसीज है. सैटिन वुड, दैट इज व्हाई मींस सम ऑफ द स्पीसीज लाइक दिस तेंदू. मतलब एक तो वो वाले इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही कॉमन है. मतलब यूपीएससी एक तो उस टाइप की चीजें पूछता है, दे आर वेरी कॉमन.
और या तो वो पूछता है जो दे आर वेरी रेयर या स्पेशल। तो इस टाइप के दोनों वैरायटी आपको, इनको तो ध्यान ही रखना पड़ेगा। अब आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि रेड सैंडर्स किस टाइप के फॉरेस्ट टाइप में होता है, मेनली ड्राई डेसिडुअस नेचर में होगा, ठीक है। द सेम वे नॉर्दर्न, थोड़ा सा जितना भी सदर्न पार्ट है एमपी की तरफ उधर ठीक है, और जितना भी आप नॉर्दर्न पार्ट में जाओगे इट विल बी साल। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, थॉर्नी में जिसमें कि सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा, तो लीव्स आर दे आर चेंज इनटू थॉर्न्स। हार्डवुड स्पीसीज होंगे एंड स्पीसीज ऑफ एकेसिया आर कॉमन। जितने भी टाइप के बबूल हैं, एकेसिया इज बबूल, क्लाइंबर्स वेरी फ्यू, सन लविंग वीडी स्पीसीज प्रीडोमिनेट, फाउंड इन इंडियन डेजर्ट्स, सम ऑफ द जेनेटिक प्लेन एरियाज, और जो भी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स होंगे वहां पे इस टाइप का स्पीसीज होगा। कॉमन स्पीसीज आर लाइक खैर, रिमझा, ये तो बहुत ही, नीम तो बहुत टाइप के उस पे है, तो नीम जैसे है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीम कहां कहां मिलता है, किस किस फॉरेस्ट टाइप में नीम मिल सकता है। बट एकेसिया जो है लाइक दिस इज अ वेरी स्पेशल स्पीसीज ऑफ राजस्थान इन डेजर्ट एरियाज, खैर एंड खेजरी। आप राजस्थान की तरफ कहीं भी जाओगे तो आपने एक अजीब सा पेड़ देखा होगा, कभी गए उधर है, खेजड़ी देखा है? आप ट्रेन से जहां से भी निकलोगे आपको खेजड़ी दिखेगा सामने, मतलब एक स्पेशल टाइप का आपको पेड़ दिखेगा जो कि दूर दूर पे होगा, मतलब बहुत ही डेंसिटी नहीं होगी पास पास पे, इवन खेतों में भी खड़ा होगा वो, है देखा होगा ना? हाँ पक्का देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई राजस्थान की तरफ गया उसको खेजड़ी ना दिखाओ, है ना, जैसे बबूल ना दिखाओ। तो खेजड़ी, क्योंकि ये इसका वहां पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, इसके जो बहुत सारे जो सीड्स होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, उनसे भी वो दे यूज इट लाइक अ वेजिटेबल, वहां के जो कॉमन क्विजीन में यूज होता है। कंजू, तो ये सब स्पेशल स्पीसीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, लाइक दिस, मतलब एकेसिया, खैर, खेजड़ी, कांजू, ये याद रखना पड़ेगा। लिटरल एंड सैम फॉरेस्ट, दे आर ऑल्सो ट्रॉपिकल वैरायटी, मोस्टली मैंग्रोव्स होंगे इसमें, इनके न्यूमेटोफोर्स होंगे, स्टिल्ट रूट्स होंगे, दे हैव largely they are mangroves found in coastal belt, they are halophytic, means they can sustain even the salty soil, that is why they are found in the coastal regions। मतलब साल्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में, वैसा नहीं कि हार्ड पैन में वो उगाएंगे, बट दलदल में इफ देयर इज साल्ट इन अ मार्शी लैंड दे कैन सस्टेन। दे आर एवरग्रीन, दे हैव pneumatophores, means air roots, roots are of still type, such type of roots are there, like this is land, they are like this। viviparous germination, what is this? Seeds germinate while still on the mother trees, वो वहीं पे जर्मिनेट हो जाता है, उसके जड़ वहीं निकल आती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इफ सीड वो वहां पे गिरेगा तो स्टार्टिंग में तो उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं होगी, वो तो सीड ही है ना, तो इफ इट ग्रोज सम ऑर्गन्स लाइक रूट्स, लाइक लीव्स, फिर वो गिरेगा तो इट विल सस्टेन। तो वो सीड इसलिए नहीं मतलब गिराते हैं, वो क्या करते हैं, पहले उसको जर्मिनेट कर लेते हैं, देन फाइनली उसको गिराते हैं कि सो दैट दे कैन सस्टेन। सो दिस इज कॉल्ड viviparous germination। स्पीसीज आर रिलेटिवली फ्यू, है ना, बट अकर ग्रेगरियसली, मींस दे ग्रो इन ग्रुप्स, they are gregarious in nature। Generally fruits or seeds of the trees are large but lighter than water so that they can float। Mangroves are mainly distributed along the east coast in Sundarbans, Brahmani, Baitarani, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri delta, and west coast of Gujarat also, and Andaman and Nicobar also। Like in Sundarbans, some of the species is like Sundari, that is why it is called Sundarbans। Bruguiera, Soneraceae, Agar, they are Nipa, they are the types, tree types। Now come to subtropical forest, subtropical broad-leaved hill forests, and subtropical pine forest, means as
Now you are going in the hilly areas, means they are found above the 900-meter altitude. The flora is a mixture of wet evergreen and temperate forest, means there will be a mixture of such type forest, means अचानक से nature change नहीं हो जाएगा, there will be a transition zone. So that transition zone is known as subtropical broadleaf hill forest, mixture of wet evergreen forest and temperate forest, luxuriant with evergreen species because they are broad-leaved. Mostly यहाँ पर evergreen होंगे, ये सारे एरियाज हैं जहां पे पाए जाते हैं. The species of Lauraceae are predominant in Western Ghats. This is a special feature. Species of Lauraceae. In the lower ranges of Eastern Himalayas, the forests have been severely affected by shifting cultivation. This is also important. They have been deforested. These forests are rich in orchids, bamboos, and creepers. In Kerala, like this Machilus, Meliosma, Celtis. I think it is very tough to memorize such type of names. Subtropical pine forest. Pine forest, as the name suggests, predominant pine species. Predominance of evergreen conifers. Pines are like this, cone shaped. So such type of conifers, and because they have needle leaf, because of needle leaf, they are evergreen. Because of needle leaf, they are evergreen. Practically predominant association of pines, considerably influenced with periodical fires. You know that in hilly regions of Uttarakhand, like they are caught into fire occasionally. Shrubs are very few, but climbers and bamboos are absent. है ना, वो है ही नहीं है. Annual herbs and bulbous herbs are common. Herbaceous species are common. Found in the dry slopes of Western Himalayas, Eastern Himalayas, and Northeast. Cheed is the special species of pine forest. Cheed बोलते हैं इसको वहां पे. It is influenced by periodical fires, right? And it is also found in Khasi, Manipur, and Naga hills. वहां पे भी in similar altitudes. Main factor is altitude. यहां से यहां तक ये पाया जाएगा. सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट. एक तो आपका सब ट्रॉपिकल में क्या क्या हो गया? दिस वाज सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, देन सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब अल्टीट्यूड डिसाइड कर रहे हैं कि वो सब ट्रॉपिकल है. रेनफॉल इज डिसाइडिंग whether it is evergreen या ड्राई एवरग्रीन है. वो ब्रॉड लीफ था, ये ड्राई एवरग्रीन. इट हैज स्मॉलर लीव्स. वो ब्रॉड लीफ था, इसमें लीफ थोड़ा सा स्मॉल होगा. दैट इज व्हाई इट इज अ डिफरेंट वैरायटी. Some of it will also include some thorny species. Canopy यहां पे भी dense है, green होगा because evergreen है. Shrubby growth predominates, shrubs हैं. Herbs भी होंगे इसमें, grasses भी होंगे during monsoon. They are found in Shivalik hills and the foothill zones of Himalayas up to a height of this. Practically scrub forest. Very low type of vegetation भी होगी इसमें. Small evergreen stunted trees in Bhabar zone, in Shivalik zone, and the Western Himalayas. मतलब mainly they are found in Western Himalayas. Eastern Himalayas में उतना ये नहीं है. Main varieties are like olive. Olive is, I think, Indian olive. वो ऑलिव नहीं जो स्पेन में होता है. इट इज इंडियन वैरायटी. एकेसिया मोडेस्टा, ये थोड़ा सा ड्राई नेचर का स्पीसीज है उनका. पिस्टासिया, पिस्ता जो बोलते हो आप, ड्राई फ्रूट है. टेम्परेट फॉरेस्ट, मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, दे आर एक्चुअली शोला फॉरेस्ट. मोस्टली दे आर शोला टाइप. दे आर अ क्लोज्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट.
क्लोज मीन्स ये भी एक डेंस नेचर का फॉरेस्ट होगा. दे अकर इन द हायर हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स, and in this area of western ghats like Nilgiris, Palanis, Annamalai, Tirunelveli hills. ये लगभग इस हाइट पे होगा. ओके, ये वही हिली ट्रैक्ट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, सेम रीजन. एंड इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमालयस टू द ईस्ट ऑफ 88 डिग्री ईस्ट, इस लॉन्गिट्यूड के बियॉन्ड में होगा, इंक्लूडिंग हिल्स ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश. ओके, एंड वेस्टर्न घाट में इसको स्पेशली इट इज नोन बाय द नेम ऑफ शोला फॉरेस्ट. And one special thing is that the occurrence of Himalayan plants like rhododendron, this is a special species found in mainly in Himalayas. In these solar forests is a mystery. In some of the rhododendron are also found in solar. Rhododendron is not found only in Himalayas. They are also found in solar forests, and that is a mystery. Paleobotanist, some Vishnu Mittal, suggested that these are the remnants of vegetation driven to South India during the Quaternary Ice Age. मीन्स वो वहां से वहां माइग्रेट कर गए अबाउट 2.6 मिलियन ईयर्स अगो विद सब्सिक्वेंट चेंजेस इन द ट्रॉपिक्स ऑफ साउथ इंडिया. द conifers are absent here in this forest. Conifers are absent. Trees have large girth and branching crowns. And this type of forest is characterized with oak trees and chestnut trees. This is the special variety of these forests, oaks and chestnut. Now, such type of things are important for examination purposes. That these montane, wet, temperate forests, they are known as shola. In particular, this region in Nilgiri, Palni, Anaimalai, Tirunelveli hills areas. In Western Ghats, you can say, in the southern tip of Western Ghats, right? And there is also some species of rhododendron. Okay, and they are predominant with oak and chestnut. देखो क्वेश्चंस बिटवीन द लाइंस ही पूछे जाते हैं हमेशा. इफ यू स्किप दिस यू माइट गेट कंफ्यूज देयर. दे आर द कॉमन वैरायटीज लाइक इन कालिम्पोंग, वेस्ट बंगाल, लाइक दिस मैचुलस, सिनेमन, मैग्नोलिया, चिलोनी, इंडियन चेस्टनट, ओक, प्लम. प्लम तो खाया हुआ है ना. देन हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफर्स प्रीडोमिनेट. अब टेम्परेट फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया. तो टेम्परेट है तो टेम्परेट में कॉनिफर्स स्टार्ट हो जाएंगे, है ना. एक तो कॉनिफर्स वहां भी था, स्पेशली जो पाइन फॉरेस्ट था. फिर यहां पे कॉनिफर्स प्रीडोमिनेट करेंगे. ऑलमोस्ट ऑल द स्पीसीज विल बी ऑफ द टाइप ऑफ कोन शेप्ड with varying evergreen species, and deciduous shrubs form the undergrowth. Means in the undergrowth this will be deciduous shrubs. Mosses हो सकते हैं, ferns हो सकते हैं. यहाँ पे luxuriant herbaceous vegetation, herbs like vegetation. They extend along the whole length of Himalayas in a particular height. अभी हम altitude में और ऊपर चले, around 1800 to 2000 meter altitude. In the eastern Himalayas, the rainfall is much heavier, and therefore the vegetation is moist temperate forest. Right? ये वहां पे इसीलिए moist temperate forest है. And luxuriant and dense, like in Chakrata region of Uttarakhand, the type is oak, fir. Oak भी मिलेगा, but fir, spruce, deodar, they will predominate. Like deodar, spruce, फर. ओक एंड चेस्टनट भी हैं देखो यहां पे भी, बट उस फॉरेस्ट टाइप में ओक एंड चेस्टनट ही था ज्यादातर. यहां पे दे आर मिक्स्ड. अब यहां के स्पेशल वैरायटी इफ यू फोकस, दिस इज स्प्रूस एंड देवदार एंड फर एज वेल. हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, और रेनफॉल अमाउंट कम हो गया. The same conifers will predominate. थोड़ा सा xerophytic shrub species होंगे क्योंकि ड्राई हो गया नेचर. Here special variety चिलगोजा,
ये भी खाते हैं ना एज ए ड्राई फ्रूट, चिलगोजा खाया होगा। देन सब अल्पाइन, नाउ अब ये हम बिल्कुल हाइट में चले गए, अल्पाइन फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया। तो सब अल्पाइन, मॉइस्ट अल्पाइन एंड ड्राई अल्पाइन। अब ये सारा जो फॉरेस्ट है इस पे क्या है कि सम ऑफ द ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रासेस आर देयर। मोस्टली यहां पे भी अगर ट्री स्पीसीज है तो कॉनिफर्स ही होंगे, श्रब्स भी होंगे, और श्रब्स विल बी स्मॉल एंड स्टंटेड ग्रोथ। क्यों? क्योंकि बिकॉज हाइट बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड में है, टेम्परेचर बहुत ही लो है। नाउ सी दैट एपिफिटिक मॉस, लाइकेन एंड फर्ड्स आर अबंडेंट आल्सो हियर, यहां पे भी ये है को, बट क्लाइंबर्स आर वेरी रेयर। स्पीसीज, दिस पर्टिकुलर स्पीसीज rhododendron is a common variety here. Rhododendron, it covers the major parts of subalpine forest. अब ये this is important for your exam, in which forest type rhododendrons are predominant in subalpine forest. Due to heavy rainfall and high humidity, the timberline in eastern Himalayas is higher than in the western Himalayas. You know that there amount of rainfall is higher. Okay, species are like this: fir, cal, spruce, rhododendron, most important, moist alpine, scrub. This was subalpine, this is moist alpine, a low scrubby evergreen system, mainly the species of rhododendron. अब जितना भी अल्पाइन वेजिटेशन है उसमें rhododendron will predominate. Other things are like this. Birch, rhododendron, barberries, honey shakal, ये सारा इंपॉर्टेंट है। Then dry alpine means the highest in altitude and they are the driest in rainfall. It is xerophytic formation in which dwarf shrubs predominate. In dry alpine, predominant species is juniper. So here juniper is the predominant species. Artemisia as well, potentilla as well. Okay, so this is all about blueberries होते हैं, हाँ? जूनिपर पता नहीं है मुझे, ब्लूबेरीज होते हैं क्या इसमें, जो मिलता है एज ए ड्राई फ्रूट, ब्लूबेरीज। अच्छा, इट माइट बी, हो सकता है, ठीक है। सो दे आर स्पेशल स्पीसीज, जूनिपर एंड आर्टिमिशिया, मतलब ये ड्राई अल्पाइन का, जैसे इस टाइप का जो है ना, यहां से ही क्वेश्चंस में भी आस्क्ड। तो ठीक है, इसको हम लोग एंड कर दें। Introducing the Prelims Target course and Prelims Test Series at Prodigy IAS. Designed for UPSC Prelims 2026, this comprehensive program offers in-depth classes on history, geography, science and tech, environment, polity and governance, and economy. Stay updated with current affairs and sharpen your skills with our Prelims Test Series consisting of 50 full-length tests covering all subjects along with CSAT. Join Prodigy IAS and stay ahead.